यस थैंक यू अजय आउ किए जॉइन कर यस हमने जॉइन कर गले चलते आम पाठ पढ़ीदे जदि किसी इश्यू हो सांगे सांगे कमेंट करेंगे पे कहीं मुझे एवं फर्स्ट क्लास करी इंटरनेट इश्यू गुड़ाए होता से इंटरनेट इश्यू करी किसी देखा जाऊनी बा ऑडियो वीडियो किसी लेकिंग हो मत सांगे सांगे कमेंट कले से जिनसा ठीक करने चेष्टा करें ओके तो आज क्लास रे हाँ लास्ट क्लास रे हमें कौन करथिला पिला माने लास्ट क्लास के हम बजट लाइन बा बजट कांस्टेंट पढ़ी देथिले आउ सेही जगह रो ही हमें कंटिन्यू करिबा एक्जेक्टली जोटा कि देखा जाउची पिला माने एई जगह रे मु देथिली और किछ होमवर्क देथिली बोदे व्हाट विल हैपन टू द बजट लाइन व्हेन प्राइस चेंजेस ओके एटा पढ़ीथिला होमवर्क किछ देथिली बोदे यदि होमवर्क किछ देइनी ताहले ऑलराइट मु आपको पढुची मोर तो मने पड़नी कोन देथिली कोन नाही चलते हमें आपको कंटिन्यू करिबा आज क्लास रे हम प्रेफरेंसेस राइट कौन पढ़ेगा प्रेफरेंसेस प्रिफरेंसेस प्रिफरेंसेस माने कौन पिला माने प्रिफरेंस प्रिफरेंस रो अर्थ हम कौन कहूचे व्हाट द कंज्यूमर वांट प्रिफरेंस माने कौन व्हाट द कंज्यूमर ओके प्रिफरेंसेस माने कौन गोटे कंज्यूमर कौन चाहूची व्हाट द कंज्यूमर व्हाट द कंज्यूमर वांट्स कंज्यूमर कौन चाहूची ताको हम प्रिफरेंस ओके हम फर्स्ट क्लास रे तो कांस्टेंट बजट कांस्टेंट पढ़ीचे बजट इनकम मनी इनकम और द बजट ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट जिनस हम पढ़ी देछे आज क्लासटा भेरी इंपोर्टेंट होगा जाऊँगी बिकज आम प्रिफरेन्सेस पर्टिकुलाली आम कंज्यूमर कौन चाहूँ से जिन चाहिए ये जगह जाना कौन व्हाट द कंज्यूमर वांट्स से प्रिफरेन्सेस को पर्टिकुलाली आम यूटिलिटी सहित लिंक कर लास्ट क्लास रे कही यूटिलिटी विषय यूटिलिटी सहित लिंक कर यूटिलिटी को आम टू टाइप्स रे मेजर कर ठीक अच्छे फास्ट कौन फाइनल मेजरमेंट cardinal measurement और second one is the ordinal measurement all right ordinal measurement ओके आमे ऑर्डिनल मेजरमेंट को फोकस करिवा कार्डिनल मेजरमेंट को हम फोकस करिवा नहीं बिकॉज मु कंसीडर करिवी कार्डिनल मेजरमेंट जोटा कि तमे प्लस टू सेकंड ईयर पार्ट रे पढ़ी सारी राइट ए विषय को हमें जीवानी बिकॉज ए जगह क्वेश्चन भी आसीबनी इरिलेवेंट कांसेप्ट जोटा कि प्लस टू रे तमे ऑलरेडी पढ़ी सारी ए एबे पाई वर्तमान पाई प्लस 3 रे तमे ऑर्डिनल मेजरमेंट पढ़िबो एटा तुम पाई इरिलेवेंट हो बट दिस कार्डिनल मेजरमेंट यही कार्डिनल मेजरमेंट फाउंडेशन बुझेला एटा बेस क्रिएट करता एटा बुझिले जाए एटा जदि बुझिथिबो तापर जे तमे ऑर्डिनल मेजरमेंट को भलसे बुझ ऑलराइट मु कंसीडर करछि पिला माने तमे प्लस 2 रे सब पढ़िछ जेमिति कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ए सब कांसेप्ट तमे पढ़ि सारिछ वर्तमान पे मु कोन भाबुछि मु ऑर्डिनल मेजरमेंट को शिफ्ट करी बजट क्वेश्चन हम पढ़ि सारिछे ऑर्डिनल मेजरमेंट हम कोन पढ़िबा पिला माने इंडिफरेंस का कौन इंडिफरेंस का ठीक है इंडिफरेंस एंड इंडिफरेंस राइट indifference means no difference ओके indifference कर्व माने no difference এই জিনিস को हमें चलते पढ़ा indifference कर्व कौन indifference कर्व डेफिनेशन मु ए जगह लिखि देछि पिला माने सी ऑलरेडी लिखि देछि हम पे प्रिपेयर करछि टाइम टी बचि जिवो बोली लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर ए जगह रे सैटिस्फैक्शन को हमें यूटिलिटी कहि परिबा राइट कोन कहबा यूटिलिटी राइट ये जगह रे satisfaction की utility okay which yield same level of utility or same level of satisfaction to the consumer so that he is indifferent between different bundles of goods available to him all right बुझियला indifference कब माने कोन एटा गोटे ग्राफ जो जगह रे लोकस ऑफ पॉइंट्स बा वेरियस पॉइंट्स हमें पाइबा डिफरेंट वेरियस पॉइंट आमे वेरियस पॉइंट्स पाइबा जो जगह रे कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन पाई थाए ऑलराइट जो जगह रे कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन पाई थाए
तो indifference curve डेफिनेशन पाई सारा पर let me tell you how indifference curves look. या पाई हम गोटे टेबल नेबा गोटे टेबल नेबी पिला माने ए जगह रे मु गोटे टेबल लेकी बतेबा पाई चेष्टा करबी जे इंडिफरेंस कर्व केमती देखा जाए. हियर इज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन आमे नेबा फर्स्ट कॉलम रे कॉम्बिनेशन आमे गोटे कॉलम रे कॉम्बिनेशन नेबा आउ गोटे कॉलम रे पुट x नेबा आउ गोटे कॉलम रे आमे पुट y नेबा. ठीक अछि हले ए जगह हम कोन देखले पिला माने ए जगह रे आमे इंटरनेट इश्यू होउथबो पिला माने यदि इंटरनेट इश्यू हो जे प्लीज कमेंट करंतु. Okay, combination of different combination. Let's say here is the combination A, B, C, D, E. Okay, हम कितने combination नहीं चे A, B, C, D, E पांचटा combination नहीं चे. Good combination A रे धरी नहीं जाऊ हमें good X गोटे consumption करूँ और goods Y 18 number of goods हमें consumption. ठीक है ची हमें 18 टा good Y consumption करूँ और गोटे गोटे unit of good X consumption. Let's suppose आम गुड x को 1 by 1 बढ़े चलिए 2 3 4 5 गोटे गोटे यूनिट की बढ़े चलचे तापर गुड्स y कौन हम टिके टिके कमी आसबा बिकॉज मैं कौन कही लास्ट क्लास रे मु बजेट कांस्टेंट पढ़े मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट कंज्यूमर पाखरे जिते भी मनी इनकम रहिबो सब कांस्टेंट रहिबो सी बजेट कांस्टेंट हमरो बजेट कांस्टेंट सेम बजेट रे जते बेले हमें गुड x बढ़े चलिबा गुड्स y को हमें किछि किछि कमे चलिबा नहले हमको बजेट परमिशन देबनी राइट. तो ए जगह रे कोन करबा जते बेले हमें b कॉम्बिनेशन को जीवा बीटा यूनिट ऑफ गुड x कंजप्शन करूचे सो दैट वी हैव टू सैक्रिफाइस सम गुड्स ऑफ y सम गुड्स ऑफ y केतटा हमको y गुड्स को सैक्रिफाइस करबा सेटा ए जगह रे लेट्स सपोज 13 हमें कंजप्शन करूची 13 कंजप्शन करूची तापरे पुणी कमी जाउची 9 को कमी जीवो अगेन 6 को कमी जीवो आउ तापरे धरि निया जाव हमरो 4 को कमी जाव. ठीक अछि ई कॉम्बिनेशन रे हमें 5 plus 4 गुड्स कंजप्शन ई कॉम्बिनेशन रे हमें 5 plus 4 गुड्स कंजप्शन राइट 5 plus 4 गुड्स कंजप्शन जेते बेले हमें ए कॉम्बिनेशन रे 1 plus 18 बी कॉम्बिनेशन रे 2 कंजप्शन करूचे सी ए जगह मु लिखि लेउची कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन एक कॉम्बिनेशन रे हमें कोन करछे 1 plus 18 कॉम्बिनेशन माने लेट्स सी हियर 1x plus 18y हम कंजप्शन करूचे b कॉम्बिनेशन रे हमें कोन करछे 2x plus 13y कंजप्शन करूचे c कॉम्बिनेशन रे हमें कोन करछे 3x x गोटे गोटे बढ़ी जाइए 3x plus 9y d कॉम्बिनेशन रे कोन हेछि 4x plus 6y एवं e कॉम्बिनेशन रे हमें कोन करछे 5x plus here is the 4y ए जगह रे each combination gives same level of satisfaction कोन करछि all the combinations all the level of combination all the combination कोन करछि gives same satisfaction. ठीक अछि कोन अछि पिला माने all the combination gives same satisfaction जते भी combination ए जगह रे हमें नै छे a b c d e होय त गोटे x 18 टा y 2y 13y सॉरी 2x 13y ए सब गुड्स हमको कोन होई छी सब कॉम्बिनेशन हमको सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन यदि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन अछि तथापि भी हमें सेम सैटिस्फैक्शन पाई छी कोन सेम सैटिस्फैक्शन काहे कि बिकॉज़
दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस। ओके, एटा को तो हम इंडिफरेंस कहूचे। एई विषय को हम गोटे कर्व रे जेते एक्सप्लेन करबा को चेष्टा करबा। लेट्स सी हियर केमिति हबो। एक्सिस और वाई एक्सिस हम ए जगह नहीं जीवा। ओके, एक्स एक्सिस जगह वाई एक्सिस 0। मैं एई जगह कौन करू पिला माने वेरी टेक्निकली हमें एक्स एक्सिस रे गुड एक्स नहीं जीवा और वाई एक्सिस रे गुड वाई अछि। वेरी इंटरेस्टिंगली हमें ए जगह दीटा जिनस ना वेरी इंटरेस्टिंगली हमें ए जगह दीटा गुड्स को दीटा एक्सिस रे नहीं। ठीक अच्छे। तापर कौन अच्छी एक्स एक्सिस रे हमें नंबर ऑफ गुड्स नहीं जीवा 1 2 3 4 5 पांचटा गुड्स अच्छी 1 2 3 4 5 पांचटा गुड्स को नहीं गली। तापर कौन अच्छी पिला माने वाई एक्सिस रे हम कौन कौन नौचे वाई एक्सिस रे हमें गुड्स वाई नहीं जे कौन अच्छी मैक्सिमम 18 अच्छी माने हमें 20 नबा 5 10 15 20 5 स्केल रे मेजर कर देली 5 10 15 एंड दिस इज 20 बुझेला। तेबे हमें फास्ट कॉम्बिनेशन है 18 प्लस 1 18 प्लस 1 सेकेंड कॉम्बिनेशन रे कौन है 13 प्लस 2 13 एटा 15 15 रो तल को आसीबो 13 प्लस ए जगह पाइबा। थर्ड कॉम्बिनेशन कौन है 3 प्लस 9 ए जगह रे 3 प्लस 9। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन केते अछि 4 प्लस 6 5 रो ऊपर 8 ए जगह रे हो देन 4 प्लस 5 ए जगह रे हो। जेतेबेले हमें ईच पॉइंट को जॉइन करबा पिला माने एरे कोन होउची तेबेले हम लोग ईच पॉइंट को जॉइन करदेली मु गोटे कर्व पाइगली। एई कर्व को हमें आईसी कहबा। आईसी माने कोन इंडिफरेंस एटा को हमें इंडिफरेंस कर्व कहबा। ठीक अछि एटा को हमें इंडिफरेंस इंडिफरेंस कर्व बा आईसी कर्व। फर्स्ट कॉम्बिनेशन कोडा दिस इज ए बी सी डी। each combination gives you the same level of satisfaction। लास्ट स्लाइड रे कहिची कोन कहिची ए रे हमें जते satisfaction पाउचे बी पॉइंट रे भी सेति की satisfaction पाउचे सी पॉइंट रे भी सेति की पाइबा डी रे भी सेति की पाइबा ई रे भी सेति की पाइबा। नंबर ऑफ गुड्स अदल बदल हे जीवो या को हमें सब्स्टिट्यूशन कहबा आकु असले मु बतेबी। फॉर द टाइम बिंग एबे हम कोन देखुचे या को इंडिफरेंस कर्व कहूचे बिकॉज़ each point gives same level of satisfaction to the consumer। कौन same satisfaction सेति पई तो कहा जाउची same satisfaction no differences कौन no differences सेति पई तो या को कहा जाए indifference या को indifference and is curve या को हमें indifference curve। ऑलराइट बुझियला हमें या को indifference curve काहे कहबा each point gives same level of satisfaction that means there is no difference। No difference means there is indifference as it is the curve it is the indifference curve। all right okay ठीक अछि ताकू पढिबा indifference curve हमें देखि सल्ला परे हम कोन देखिबा पिला माने गोटे इंपोर्टेंट विषय एठी मु नोटाबाइट लिखि दउची बी कर दउची राइट। ये जो कर्व टा स्मूथ मूवमेंट आइछि smoothness of the curve smooth movement of the curve represents मन रखि थाओ smooth movement of the curve ए कर्व जेमते स्मूथ मूवमेंट करछि ए स्मूथ मूवमेंट कोन रिप्रेजेंट करछि पिला माने स्मूथ मूवमेंट ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट्स कोन रिप्रेजेंट्स करछि
represents that the goods in question, the goods in question, the goods in questions are divisible, perfectly divisible. The goods in questions are perfectly divisible. A good star, quota, good X or good Y टा perfectly divisible. एटा हमें divide करि परिबा. Sometimes some goods are indivisible ହେଇଥାଏ. ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ନେଇଛି. Indivisible ହେଇଥିଲେ କ'ଣ? ଏ curve ର smoothness ଆସିବନି. Indifference curve ର smoothness ଆସିବନି. Difference curve ଯେହେତୁ smooth ଅଛି, କ'ଣ କହିବା? The good in questions, good y and good y are perfectly divisible. Alright. Indifference curve ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ concept ବତେଇବି, that is the indifference map. Indifference map. Alright. What do you mean by indifference map? Indifference map କାହାକୁ କୁହାଯିବା? Indifference map କାହାକୁ କୁହାଯିବ ପିଲାମାନେ? Indifference map ମାନେ କ'ଣ? It is the collections of the indifference curve that a consumer prefer. Okay, କ'ଣ? It is the collection of ICs, indifference curves. गुड़ाए indifference curve ର collection that a consumer prefer. Okay, କ'ଣ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ନେଇଯିବା. ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ. ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ. ଠିକ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛେ? x axis ନେଇଗଲେ. এই জায়গায় 0 ନେଇଯିବା. এই ଜାଗାରେ ଆମେ y axis ନେଇଯିବା. ଠିକ୍ ଅଛି. এই ଜାଗାରେ ଆମେ good x ନେଇଛେ already. এই ଜାଗାରେ good y ନେଇଛେ. ଓକେ, good x ନେଇଛେ, good y. good x ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ପିଲାମାନେ? ଆମେ 1 2 3 4 5 ନେଇଛେ. এই ଜାଗାରେ ଆମେ depending upon our conditions ଆମେ କ'ଣ preferences ନେଉଛେ ସେଟା ଦେଇଛେ. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ indifference curve ନେଉଛେ, ମୁଁ ଏଟାକୁ blank ଛାଡ଼ିଦେବି. এই ଜାଗାରେ ଗୋଟେ first indifference curve ନାଁ ଦେଇଦେବି. ତାପରେ second indifference curve ଟେ parallelly ନେଇଯିବି. ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଦେବି IC. ଆଉ ଗୋଟେ indifference curve ନେଇଯିବି. ନାଁ ଦେଇଦେବି IC3. ନାଁ ଦେଇଦେବା IC. ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ indifference curve ତା ଉପରେ indifference curve ଯିବେ. ଏଇ ଯୋଉ collections of the indifference curve IC1 2 3 4 ଗୁଡ଼ାଏ indifference curve ଅଛି. ଏଇ collections of indifference curve କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? Indifference map କହିବା. Alright. ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ important ବିଷୟ ମୁଁ notate କରିଦେଉଛି. A higher indifference curve gives higher level of satisfaction and a lower indifference curve gives the lower level of satisfaction. Okay, a higher IC gives higher satisfaction. A higher IC gives higher level of satisfaction. Right? And a lower IC gives lower level of satisfaction. Alright. Alright. मैंने वीडियो को लाइक कर दिया तो मैं आपको बढ़िया फटाफट वीडियो को लाइक कर दिया तो ठीक अच्छे मैं आपको बढ़िया indifference curve बुझीगले. indifference curve बुझीगले. see here एटा indifference curve. तापर हमें ए जगह indifference map बुझीगले. alright, indifference curve पर indifference map बुझले. indifference map पर आउ कोन अछि पिला माने indifference curve रो बड़ा assumption. see हमें जतले कौन से थ्योरी के पढुचे we need to have some assumption. हमको assumption ठीक अछि assumption.
assumption गुड़ा ठीक अछि आमे ए जगह रे किछटा assumption पढ़िबा assumption of the indifference all right the first assumption कोन कहूची completeness first कोन कहूची completeness first assumption हमहु completeness माने कोन पिला माने let's see here completeness means a consumer can always compare and rank any two bundle okay consumer कौन करिवो दीटा बंडल रे कंपेयर करिवो for any two bundles A and B consumer can say I can prefer from B okay मु लिखि दउची okay consumer कौन कहिवो consumer preference को complete करिवो complete preference completeness माने कौन complete idea of preferences हम जो प्रिफरेंसेस अच्छी प्रिफरेंसेस ऊपर एक कंप्लीट आइडिया हमर रहबा बहुत जरूरी जेमिति कि सी ए जगह रे इफ अ कंज्यूमर से if a consumer say I prefer A to B A यदि गोटे सर्कमस्टेंसेस कौन से गोटे कंज्यूमर कहूची I prefer A to B एटा कंप्लीट आइडिया ऑफ प्रेफरेंसेस हम जो आइडिया अछि यदि A और B दीटा गुड्स हम पाखरे अछि कंज्यूमर कौन कहूची A को प्रिफर करछि किंबा B को प्रिफर कर से कंप्लीट कहूची हमको फर्स्ट केसेस रे से A को प्रिफर कला A टू B सेकंड केसेस रे he प्रिफर कौन B टू A सॉरी he prefer B to A ठीक अछि और यदि से प्रिफर किसी करि पारुनी से क्लियर कर कहि देबा कथा he remain indifferent between two goods okay indifferent between difference between two A and B ठीक अछि सपोज हम पाखे दुटा बंडल अछि A and B कंज्यूमर कहूची I prefer A to B यदि से कहूची I prefer B to A यदि से कहूची I am indifferent between A and B जेमिति कि हम इंडिफरेंस का अपने नै छै A पॉइंट और B पॉइंट रे कंज्यूमर कोन होई छै इंडिफरेंट रहो राइट एटा भी कंज्यूमर प्रिफर करि पारि बा एटा भी कहूची हमर कंप्लीटनेस assumption राइट means the preference is well defined ए जगह लिखि दउची डिफरेंट कलर नै कि मु लिखि दउची completeness माने कोन well defined preferences well defined preferences ओके completeness बुझी हला पिला माने ओके सेकंड थिंग्स सेकंड पॉइंट हो ट्रांजिटिविटी इन हो ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिविटी माने कोन पिला माने ट्रांजिटिविटी माने कोन सी हियर इफ ए कंज्यूमर प्रिफर A to B ओके हमें प्रिफर को ग्रेटर देन चिन्ह देबा ओके और से हिसाब रे मु लिखिबी इफ अ कंज्यूमर प्रिफर A is greater than B means if a consumer prefer A to B consumer let's suppose there are two bundle A and B okay different bundle अछि A B C हम लिखि देबा A bundle B bundle C bundle अछि okay हम पाखे तीनटा bundle अछि if a consumer prefer A to B first circumstances रे यदि कंज्यूमर को हमें B और C देले कंज्यूमर प्रिफर B to C in that cases if we give a consumer A and C bundle then consumer must prefer A bundle over C
If a consumer prefer A to B, second circumstance is B to C, then he must prefer A over C. एटा को हमें ट्रांजिटिविटी रिलेशन कहि कौन यदि तुमको एप्पल भल लगुची बानाना ठारो ओके तुमको एप्पल भल लगुची बानाना और एप्पल तुम पाखे अच्छी तुम एप्पल प्रिफर करछ तुम पाखे जदी बानाना आ लेट्स सपोज सी माने कौन सी रे तो कौन सी गुड्स मो पाख माने पड़नी गुड्स माने पड़नी ऑलराइट जहां भी हो तुम बी को प्रिफर करछ ओवर सी then definitely you are preferring A over এইটা হচ্ছে কোন এইটা হচ্ছে ট্রানজিটিভিটি রিলেশন ओके तापर हमें 3 नंबर एजम्पशन को जीवा 3 नंबर एजम्पशन कोन कहूची पिला माने 3 नंबर एजम्पशन कहूची मोनोटोनिसिटी मोनोटोनिसिटी एटा क्वेश्चन आसबो व्हाट इज मोनोटोनिसिटी मोनोटोनिसिटी कोन एटा क्वेश्चन डेफिनेटली आसबो मोनोटोनिसिटी माने कोन मोर इज बेटर कोन मोर इज बेटर मोर इज मोनोटोनिसिटी रे हमें देखिबा मोर इज राइट ए जगह हमें मोर इज बेटर देखिबा ताते कोन एटलीस्ट तुम पाखे जदि दीटा बंडल अछि एटलीस्ट गोटे बंडल रे एटलीस्ट गोटे गुड्स अधिक रहइबो तापर तुम से गुड्स को प्रिफर करिबो इफ टू बंडल्स आर सेम if two bundles are same except one has more of it if of it more of at least one of goods more of at least one of the goods okay at least more of one of the goods the consumer prefer that one the consumer prefer that one ता अर्थ कोन पिला माने ता अर्थ कोन जदि तुम पाखरे बंडल ए बंडल बी अछि बंडल रे 3 + 4 अछि और बंडल बी रे 3 + 5 अछि दीटा गुड्स कॉम्बिनेशन you prefer 3 + 5 वाला why because monotonicity says that more is better एही जगह रे at least one goods बेसी सेति पय तमे कोन करिवो मोनोटोनिसिटी assumption द्वारा बी को प्रिफर करिवो ऑलराइट तापर 4 नंबर assumption अछि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ओके 4 नंबर अछि ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ऑलराइट यूटिलिटी को हमें ऑर्डिनली मेजर करिवा यूटिलिटी को हमें ऑर्डिनली मेजर करिवा ऑर्डिनल मेजरमेंट को हम रैंकिंग करिवा जोटा कि मु ऑलरेडी गोटे क्लास रे कहिछि 5 नंबर विषय कोन 5 नंबर assumption होछि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन diminishing marginal rate of substitution okay marginal rate of substitution याको हम कहता हूं MRS x for y ठीक अछि कोन अछि marginal rate of substitution diminishing marginal rate of substitution ए marginal rate of substitution कोन हम diminishing ऑलराइट ठीक अछि पिला माने आज क्लास रे मु तुमको एतिकी विषय पढेबी पिला माने दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास नेक्स्ट क्लास रे कोन पढेबी
यही 5 नंबर एजम्पशन को कंटिन्यू, राइट। कौन? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स पर वाई, एमआरएस पढ़े। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स फॉर वाई नेक्स्ट क्लास रे पढ़ेबी। और व्हेयर दिस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट, और 5 नंबर एजम्पशन को मोर क्लियर करके मु आपको बढ़ी। फॉर द टाइम बिंग क्लास 8 रखुची पिला माने। थैंक यू एवरीवन। इंटरनेट किसी इश्यू थिबा द्वारा भी मु क्लास को वेरी क्विकली बंद करुची। पेशेंस धरिकी क्लास रे एते समय रहिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद पिला माने। हमें नेक्स्ट क्लास रे बा काली ए सब जिंस पढ़िबा। ऑलराइट।